Hello everyone, welcome to Pediatrics by Dr. Anand. And in this segment, we're gonna talk about what? We're gonna talk about vaccines, a very beautiful and very important topic. Vaccines, today's topic of choice. I hope my voice is audible to everyone. And my name is Dr. Anand. This is the Unacademy NEET PG platform. And for the newcomers, you all know that in Unacademy we have something known as Plus subscription and something known as Iconic subscription. In the plus subscription we have you get the access to all the live and recorded classes. Number one, you get to what you call study from the best of the best educators all over the India, and also at the same time you get to compete in various live tests and quizzes, and also you can watch me on your iOS, on your any device. Okay, hello Surgeon of East, hello Osama. Is my voice audible to everyone? I hope my voice is coming. इन सबको देख के मैं खुश हो जाता हूँ। शिवांगी, ओसामा, ऐसा लगता है अभी तो मिले थे फिर मिल गए, अभी तो मिले थे फिर मिल गए। नाइस। And then we have Iconic subscription. In the Iconic subscription, you get the Unacademy platform and also the Prep Ladder subscription also, like the your access to the best from the two of the best. All the clinical notes, video lectures, question bank, rapid revision, and our treasure notes. Hello, Sayani. So we have the plus subscription and we have the Iconic subscription. And as a MBBS student, I can understand it is difficult to take a big amount. So this is a small code. If you use it, will be little financially comfortable for you if you want to take the whole subscription. And also we have a special class, like this is a YouTube channel, and like we also have special class on the Unacademy app, where most importantly we ask a lot of MCQs. We can ask any doubt. We never miss the classes because all the lectures are recorded, and at the same time all the notes you get. Hello Surgeon of East, my dear brother, what's up bro? जल्दी आ जाओ, पार्टी करते हैं आज। और आज मुझे बहुत ठंड लग रही है, आज ठंड ज़्यादा है शायद। And we have this updated and highly effective question bank in our in our Unacademy. And again, God bless to the students who have worked really hard to getting a PG seat. And now it's your turn. Now it's Shubhangi, Saini, Osama, Surgeon of East, our Ishita Srivastava, and amazing people turn to be there to be on the top rankers. And also we have this free test rituals which is there on Friday, Saturday, Sunday. It will be nice if you join. It's good to do all the free MCQs. It's very good. And we have already made a focus FMG 2022 batch and target NEET PG 2022 batch we have already made. Hello Subhashmita, what's up dude? Okay, let's start. Today's topic of choice is nothing but vaccine. This is a small 30 minutes class. This session will be spoken in English and Hindi language. आज का topic है vaccines. ये session आधे एक घंटे में cover किया जाएगा। और yes, and what you called the motivating quote for today is, it is during the darkest hour, it is during the darkest hour we must learn to see the light. It is during the darkest hour we must learn to see the light. जितना ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल होगा उतना ज़्यादा आप उभरोगे, जितना ज़्यादा हार्डशिप्स होंगे उतना ज़्यादा आपको पॉजिटिव होना होगा. इट इज़ ड्यूरिंग द डार्केस्ट आवर वी मस्ट लर्न, यू हैव टू लर्न. भगवान नहीं आने वाले ऊपर से नीचे तुम्हें प्रकट करके पॉजिटिवनेस देने वाले. गॉड इज नॉट गोना कम डाउन टू गिव यू पॉजिटिविटी. यू योरसेल्फ have to learn to see the light. You should learn how to be positive. You should learn how to be okay. You should learn how to be fine. You should learn by yourself how to be self sufficient. Don't depend on others. Don't beg for sympathy. Don't beg for empathy. Just you, yourself, your own amazingness is more than enough to live a life. गलत कह रहा हूँ? मैं गलत कह रहा हूँ तो बताओ मुझे, मैं गलत कह रहा हूँ? ओसामा, मैं गलत बोला, मैंने सही बोला? So today's topic of choice is vaccines. Okay, today's topic of choice is vaccine. Okay, what about vaccine? Like, what are vaccines? Definition क्या होती है vaccines की? Let's discuss this topic. Let's discuss this topic in a very simple way. What are vaccines? We all know that vaccines, it is a substance. There is something I inject in the body, and like I inject some antigen into the body, और उसके अगेंस्ट क्या होगा? उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड होंगे. उनके अगेंस्ट क्या होगा? एंटीबॉडीज विल बी फॉर्म. आई रिपीट अगेन, आई विल पुट सम एंटीजन इनटू माय बॉडी एंड उनके अगेंस्ट क्या होंगे? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे. वैक्सीन इज अ सब्सटेंस यूज्ड टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज and provide immunity against the disease. Like, I'll put a small antigen, like a live bacilli or a live thing I'll put inside my body, or antigen ke against antibodies are formed, and that is how the vaccine is gonna work.
Vaccine is a substance that used to stimulate the production of antibodies and provide immunity against the disease. Okay, now most importantly, point number one, what are the various types of vaccines? Anyone, Shubhangi, what are the various types of vaccines? So the mnemonic is STARK P. That is the mnemonic. If someone who has seen Game of Thrones, the Stark family were the most important family in the Game of Thrones. So S for subunit vaccines, S for subunit vaccine, T for toxoid vaccines, A for attenuated vaccines. I'll repeat again. The full form or the types of vaccines are, very importantly, yes, the mnemonic is STARK P. Subunit vaccine, toxoid vaccine, attenuated vaccines are for recombinant vaccine. Recombinant vaccine. K for killed vaccine. K for killed vaccine. N for pneumococcal, or not pneumococcal, polysaccharide vaccine. Polysaccharide vaccine. Polysaccharide vaccine. These are the various types of the vaccine. समझ में आ रहा है? Yes or no? Surgeon of East, yes, very good. So subunit vaccine, toxoid vaccine, attenuated vaccine, recombinant vaccine, killed vaccine, and polysaccharide vaccine. Vaccine is one of the very, very, very simple topic which can fetch you very good marks. Okay, let's go one by one. What are the various examples? Now examples करते हैं. So we all know that the mnemonic I have made was STARK. So subunit vaccine, toxoid vaccine, attenuated vaccine, recombinant vaccine, killed vaccine, and polysaccharide vaccines. ये तो हो गया. Let's do examples one by one. If we talk about the live attenuated vaccine, ये मैंने बनाए थे notes अपने. In the live attenuated vaccine, we have the bacterial live attenuated vaccine and viral live attenuated vaccine. In the bacteria, the most important one, we have something known as, have you heard of BCG vaccine? Yes. So the most important one we have is nothing but the BCG vaccine. BCG is the first important live vaccine. Then we have oral typhoid vaccine. Okay. In the viral, we have OPV, measles, or measles you say, or you say MMR, varicella, rota virus, and yellow fever vaccine. These all are the live vaccines. Okay, live vaccine. Please remember everyone, now please pay attention. This is a very important class, very short class. What are we studying? Vaccination. What are the various types of vaccines? सर आपने निमोनिक बताया, स्टार्क पी, बात होती है खत्म. अच्छा, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन में कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं? सो बैक्टीरियल एंड वायरल. इन द बैक्टीरियल, बी फॉर बैक्टीरियल, बी फॉर बीसीजी. सो बीसीजी एंड ओरल टाइफॉइड वैक्सीन. बीसीजी एंड oral typhoid vaccine. Oral typhoid vaccine is the two bacterial ones, and the viral ones you have OPV, MMR, varicella, rotavirus, and yellow fever vaccine. ठीक है, इतना याद रहेगा everyone. Please put a like button if you're able to understand. Please put a like button if you're able to understand the concept. ठीक है, तो ये नाम हमको learn basic करने ही करने हैं. तो ये क्या थे? Live attenuated vaccine. Then we have killed vaccine. Killed vaccine, again, killed vaccine is divided into bacterial and viral. Killed vaccine is divided into bacterial and viral. Bacterial से क्या होगा? Same. We have DTWP. What is DTWP? Any idea? Have you heard of DTAP and DTWP? Yes or no? Exactly. So we have something known as acellular pertussis and whole cellular pertussis. Slowly, one by one, I will unfold every point. But right now, at least if you're a newcomer, try to understand the concept. So DTAP is acellular pertussis, whereas WP is whole cellular pertussis. क्या होता है, क्यों होता है, धीरे धीरे सब पॉइंट हम पढ़ेंगे, थोड़े टाइम में पढ़ते हैं. So I'll repeat again. We have the various types of vaccine. The mnemonic is STARK. In the live attenuated vaccine, we have bacterial and oral. B से bacterial, B से BCG and oral, and oral से OPV, MMR, varicella, and rota and yellow. समझ में आ गया? I think, and learn here only, please everyone. यहीं बोल के पढ़ो, खत्म करो यहीं बोल के, ठीक है? And also in the killed vaccine, bacterial and viral. Bacterial, you have the DTWB, diphtheria, tetanus, and whole cellular pertussis. And then very important, whole cell killed typhoid also. Typhoid also can come in the killed vaccine. In viral, you have IPV. Okay, yes, inactivated polio vaccine, rabies, hepatitis A, and influenza. ये हमें learn करना पड़ेगा. You have to learn this. Viral, in the viral, you have IPV, rabies, hepatitis A, and influenza. IPV is nothing but inactivated polio vaccine, rabies, hepatitis A, and influenza. Okay, done.
Yes, very good. So killed vaccine over. I'll repeat again. What are we studying? Live vaccines over, killed vaccines over. Okay, other than killed vaccine, we have toxoid vaccine. Toxoid vaccine was the AIMS 2020 question. In AIMS 2020 question, they ask about the toxoid vaccine. So you know that we have tetanus toxoid vaccine and we have diphtheria टॉक्सॉइड वैक्सीन. दो तरह के वैक्सीन टॉक्सॉइड वैक्सीन होते हैं. डिप्थीरिया व्हाट यू कॉल्ड टॉक्सॉइड वैक्सीन एंड टेटनस टॉक्सॉइड वैक्सीन. ठीक है, डन. सो हाउ मच वी हैव कवर्ड, आई विल रिपीट अगेन. नाउ वी नो द लाइव वैक्सीन्स, we know the killed vaccines, and we know the toxoid vaccines. Toxoid vaccine, live, killed and toxoid. Okay, now next important point, we have subunit vaccines. Subunit vaccine, easy, बहुत easy. Subunit vaccine में again it is divided into bacterial and viral. In the subunit vaccine we have acellular pertussis. Remember, we had whole cellular pertussis and acellular pertussis. If you are a newcomer, first at least try to know the names. बस नाम समझने की कोशिश करो. एक होता है whole cellular pertussis, एक होता है acellular pertussis. उसमें acellular is a subunit vaccine. Okay, and in the viral, very importantly, we have influenza vaccine and recombinant hepatitis B. Influenza vaccine is a subunit vaccine and recombinant hepatitis B. Okay, I'll repeat again. What are we studying? Vaccine. The mnemonic is star P. So most importantly, live vaccines are bacterial and viral. B for bacterial, B for BCG and oral typhoid, and viral for OPV, MMR and varicella and rotavirus and yellow fever. Then we covered our killed vaccine. Then we got to know about two toxoid vaccines, diphtheria toxoid and tetanus toxoid. Then we had the subunit vaccine, जिसमें आता है very important, yes, acellular pertussis, influenza and hepatitis B. Hepatitis B. Last but not the least, we have the polysaccharide vaccine, star P, right? Polysaccharide vaccine. In polysaccharide vaccine, the various polysaccharide vaccine are meningococcal vaccine, pneumococcal vaccine, meningococcal, pneumococcal, and even Hib also, even Haemophilus influenza B, Hib also. See, these names you have to understand, you have to learn these names. Okay, so meningococcal, pneumococcal and Hib vaccine, they are the polysaccharide vaccines. Polysaccharide vaccines. And remember this, C, and we have the recombinant vaccine also. Recombinant vaccine. Recombinant means vaccines produced from genetic engineering. Vaccines produced from genetic engineering. And the examples of recombinant vaccine are HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जिसमें हम गार्डा सर्वारिक्सन गार्डासिल वी गिव फॉर द सर्वाइकल कैंसर, बेसिकली ह्यूमन पेपिलोमा वैक्सीन. एंड वी हैव हिब एंड हेपेटाइटिस बी. दीज आर द recombinant vaccine. These are the recombinant vaccine. See, these names we have to understand, learn. तो ये तो learn करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक या कोई ऐसा आतिशबाजी नहीं है. We have to learn this. Okay, now next, coming to the next part. Yes, now this topic needs discussion. Now there are various routes for giving the vaccine. Can anyone tell me? Surgeon of East Shubhangi, our Subhashmita, anyone, Osama, what are the various routes can we give vaccine? किस तरह से देते हैं हम वैक्सीन? IV देते हैं, IV इंट्रावीनस दे सकते हैं क्या हम वैक्सीन को? Very good. Okay, very good. So there are various routes of giving vaccine. You can give anyone. You can give subcutaneous, you can give intramuscular, yes or no? Can you give okay intranasal? हाँ जी सर, intranasal भी दे सकते हैं. और surgeon of East, very good bro, very good. और किस तरह देते हैं वैक्सीन other than subcutaneous, IM and IV? Most importantly, these are the various, yes, Shubhangi is right, these are the various routes: intranasal, oral, subcutaneous, intradermal and intramuscular. PG entrance question number 1, do you give IV route? No, there is no route known as IV route. IV route से कोई वैक्सीन नहीं दिया जाता. That is the first point. Okay, perfect. Intranasal, anyone? How do you give intra? अब एक एक एग्जाम्पल्स करते हैं, बहुत ईजी है, खत्म करते हैं इसको. Anyone intranasal vaccine? Can anyone help me? Intranasal कौन से देते हैं? हाँ, वेरी गुड ओसामा डियर, वेरी गुड ब्रदर. ओसामा मेरे व्हाट्सएप पे भी है, ओसामा इंस्टाग्राम पे भी है, ओसामा मेरी स्पेशल क्लास पे भी है, ओसामा मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है, हर जगह ओसामा 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 शेख, आई ऑलवेज सेइंग. हाँ जी. सो इंट्रानेजल, क्या कोई बता सकता है मेरे को कि एग्जैक्टली, वेरी गुड, शुभांगी ने पहले ही बता दिया. इन्फ्लुएंजा वाला H1N1 वैक्सीन इज गिवन इंट्रानेजल. वेरी गुड डियर, वेरी गुड. ओके, ओरल के नाम बताओ. एनीवन, एनी ओरल वैक्सीन? कोई ओरल वैक्सीन के नाम कोई हमको याद है? हैव यू हर्ड ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन? हैव यू हर्ड ऑफ रोटा वायरस? यस और नो? Yes.
So oral polio vaccine and rotavirus vaccines are the two important vaccines which we must know, OPV and rotavirus. ठीक है? And also vitamin A syrup also. Vitamin A also is given oral, but remember vitamin A is not a vaccine. Vitamin A in general in SAM and normal babies we give, but vitamin A doesn't come in the vaccine. Oral polio vaccine and rotavirus are the two important ones. Very good, surgeon of East, very good. Acha, vitamin A, if I ask question on vitamin A, how much vitamin A, how much international units vitamin A do we give to a baby? Anyone? In SAM babies, if we have to give vitamin A, how much should I give? Normally कितना होता है? Anyone? So less than 6 months, I'll write it here. Less than 6 months, 50,000 IU. IU means international units. Less than 6 months, 50,000 IU. 6 months to 1 year, 1 lakh IU. And more than 1 year, 2 lakh IU. That's how you give vitamin A. That's how you give vitamin A to the baby. Less than 6 months, 50,000 IU. 6 months to 1 year, 1 lakh IU. More than 1 year, 2 lakh IU. If the baby is more than 1 year and less than 8 kg, if the baby is more than 1 year and less than 8 kg, you give half the dose. You give half the dose, means around 1 lakh IU. More than 1 year, normally you should give 2 lakhs IU, right? But the baby is more than 1 kg and less than more than 1 year and less than 8 kg, you give 1 lakh IU. 1 lakh IU. Okay, that's it. Did you understand? Very good. So these are the important routes of giving vaccine. I'll repeat again. Intranasal was H1N1. Oral was oral polio vaccine and rotavirus. Vitamin A also we give, but it's not a vaccine. Vitamin A is not a vaccine. Okay, remember that. Has everyone understood this much? Please put a like button if you're able to understand. और ये बताओ न्यू ईयर का क्या प्लान है? कहाँ चलना है न्यू ईयर पे? काश हम लोग साथ में होते यार, मज़ा आता, कहीं साथ में घूम के आते सब लोग। हाँ जी, क्या प्लान है न्यू ईयर का? आज रात को न्यू ईयर होने वाला है। आई एम गोइंग आउट विद माई भाभी एंड भैया एंड माई वाइफ टू जस्ट टू हैव अ व्हाट यू कॉल फूड नियर बाय। तो और क्या प्लान है? कोई क्या प्लान है न्यू ईयर का? और साइनी कह रही है ओसामा 20 लाख हो गया। पैसे नहीं भेज रहा तू 20 लाख, टू 20,000 आयु दिखाना। साइन इज सो स्वीट। या 1 0 ज़्यादा हो गया। सो एवरीवन, ओसामा का बर्थडे था कल। सबने ओसामा का बर्थडे आज, ओसामा आज ही है ना बर्थडे तेरा? आज ओसामा का बर्थडे है। क्या सबने ओसामा को विश किया आज? यस और नो? कैन वी सिंग हैप्पी बर्थडे टू ओसामा, हैप्पी बर्थडे टू ओसामा शेख, हैप्पी बर्थडे ओसामा ब्रो। भगवान सब कुछ दे, खुश रहे, मस्त रहे एकदम। जल्दी से क्लियर करो, जल्दी आओ दिल्ली, पार्टी दो अच्छी सी। वेरी गुड। हाँ जी, ठीक है, समझ में आ गया इतना? वेरी गुड, ओके परफेक्ट। सो इंट्रानेजल ओवर, oral over. Coming to subcutaneous, can anyone tell me any subcutaneous vaccine? कोई subcutaneous vaccine की कोई रफली कोई एग्जाम्पल बता सकता है मेरे को subcutaneous vaccine का? गलती से कोई बता दो। हाँ जी। ओसामा बर्थडे तुम्हारा आज है, तुमने पार्टी नहीं दी, वैसे बहुत गलत बात है ये मतलब किसी का बर्थडे हो तो वो लाजमी होता है वो बंदा पार्टी देता है। यू डोंट गिव पार्टीज ब्रो, दैट्स रियली बैड। सर्जन ऑफ ईस्ट ब्रो, आस्क हिम, ही शुड गिव यू पार्टी। Okay, yes, subcutaneous vaccines are very importantly we need to understand. So that is, see, oral is over, okay? Rotavirus, oral polio vaccine and typhi oral. Please add in your notes typhi oral bhi, typhi oral also, you know what you called is now they can ask in the oral vaccine, typhi oral. And vitamin A we can give oral, but it doesn't come in the vaccine. Subcutaneous, of course, we have measles, we have MMR. Very importantly, measles, MMR, chickenpox, meningococcal polysaccharide vaccine, Japanese encephalitis, yellow fever and typhoid fever vaccine, typhoid vaccine. These all are the amazing subcutaneous vaccine. Yes, मुझे तेरा व्हाट्सएप आया था उसामा मेरे भाई, और बहुत बहुत ही ज़्यादा प्यार मेरी तरफ से। खुश रहो बस। हाँ जी। तो subcutaneous vaccine, anyone, can anyone name some examples? See, whatever we are studying in this class, whatever we are studying, please learn here only. ये मत सोचना कि अभी अभी बस पढ़ लेते हैं बाद में लर्न कर लेंगे। नो, अभी खत्म करो ना। बताओ इंटरनेजल के एग्जाम्पल क्या होते हैं? H1N1। ओरल का एग्जाम्पल क्या होता है? ओरल पोलियो, टाइफी ओरल, रोटावायरस। बस खत्म। सबक्यूटेनियस का यहाँ थाई में कौन सा देते हैं हम सबक्यूटेनियस? मीजल्स, MMR, चिकन पॉक्स, जैपनीज एंसेफेलाइटिस, येलो फीवर, टाइफॉइड, है ना? हेलो हेलो रुखसाना वानी, व्हाट्सअप, हाउ आर यू? Yes, okay. One of my favorite juniors there, Vamik. His surname is also Vani. He is from Jammu Kashmir.
ओके, एनीवन इंट्राडर्मल, कैन एनीवन हेल्प मी आउट विद इंट्राडर्मल वैक्सीन? कोई है इंट्राडर्मल वैक्सीन जो हम देते हो करके? बहुत इंपॉर्टेंट, हैव यू हर्ड ऑफ बीसीजी? सो कैन वी सी एग्जांपल्स आल्सो, कैन वी सी दिस पिक्चर, यस और नो? हाउ ही इज गिविंग द इंजेक्शन लाइक अ 15-degree एंगल, यस और नो? So this is intradermal. This is, what is this? This is intradermal, and this is subcutaneous. Can we see this very important picture? See, photographic memory is everything. Look at the picture and tell the diagnosis. Look at the picture and tell the diagnosis. So this one, this angle, this one, so this is nothing but 45-degree, this is nothing but 15-degree, and this straight away is nothing but 90-degree, 90-degree. समझ में आ रहा है इतना? ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, परफेक्टो, परफेक्टो, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। हाँ जी, कहाँ थे हम? बीसीजी, बीसी देते हैं इंट्राडर्मल, और कुछ देते हैं इंट्राडर्मल? कोई बताएगा मुझे? रेबीज का इंजेक्शन जो आता है ना, रेबीज का, रैबीप्योर नाम से आता है, यू नो राइट? ARV एंड ARS. ARV is anti-rabies vaccine and ARS is anti-rabies serum. So anti-rabies vaccine we give intradermal, anti-rabies serum we give intramuscular. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज प्लीज प्लीज। एंटी-रेबीज सीरम वी गिव इंट्रामस्कुलर एंड एंटी-रेबीज वैक्सीन वी गिव इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल। और कुछ दे सकते हैं इंट्राडर्मल? यस, बीसीजी हो गया, रेबीज हो गया, और आईपीवी। आईपीवी इज इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। कई जगह ओपी में इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन लिखा है, लेकिन द बेटर आंसर इज इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ठीक है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ओके, वेरी गुड। व्हाट अबाउट आईएम वैक्सीन ब्रो? कोई आईएम वैक्सीन के नाम बता सकते हो आप? एनी रैंडम गेसेस? कैन वी हैव सम आईएम वैक्सीन? इंट्रामस्कुलर देते हैं, थाई पे लगाते हैं छोटे बच्चे को, 6 वीक्स पे देते हैं, 10 वीक्स पे देते हैं, 14 वीक्स पे देते हैं। एनीवन? ओसामा, हेमल? यस, वेरी गुड। अच्छा, हेमल यहाँ भी आ गया। हेमल इज ऑलवेज, अगेन हेमल इज वन पर्सन हु इज देयर इन एवरी क्लास। ही वॉज देयर इन प्लस क्लास, ही वॉज देयर इन स्पेशल क्लास, नाउ इज देयर इन यूट्यूब क्लास। सो हाँ जी, वेरी ट्रू। इंट्रामस्कुलर में यूजली यू नो ऑल द टीज वी डू गिव इंट्रामस्कुलर। हेपेटाइटिस ए, जहाँ भी टी आ जाए ना, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, पेंटावैक, all this. Okay, so hepatitis A, hepatitis B, tetanus, या वेरी गुड, वेरी गुड। किसने बताया? निशी अग्रवाल, वेरी गुड। TT, टेटनस टॉक्साइड, ये सारे जो टी होते हैं हम आईएम देते हैं इंट्रामस्कुलर। सो द एग्जांपल्स आर pentavalent, and अभी बताऊंगा, I'll tell you now what is pentavac and pentexim, I'll tell you that. So we have pentavalent vaccine, hepatitis A, tetanus, hepatitis B, hemophilus influenza B, this pneumococcal vaccine PCV, like pneumococcal polysaccharide vaccine, HPV, human papilloma vaccine, DPT, diphtheria pertussis tetanus, TT, tetanus toxoid, and IPV, inactivated polio vaccine. And now at least dear friends, please understand that कुछ vaccines mix हो रहे हैं, मतलब DP IPV is here also, IPV is there also, typhoid dot का oral भी आता है, injection भी आता है, so it happens that way, nothing to worry. So at least the take home message is that all the T's comes in IM, pentavalent, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, TT, DPT, ये सारे हमारे किस में आते हैं? IM में आते हैं। Has everyone understood this much? Please put a like button that you're able to understand. We have Aruna, Surgeon of East, Osama, Nishi, Shubhangi. समझ में आ रहा है या दिमाग के ऊपर से जा रहा है? अगर दिमाग के ऊपर से जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है तो डबल अच्छी बात है, ठीक है, डन, वेरी गुड, परफेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, बोलो राम राम राम। मेरी बारी। Okay, so there are some vaccines dear which we can, okay, let's, I think थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एक बार। So what are we studying? We are studying vaccines. There are various types of vaccine. The mnemonic is TARC-P, subunit vaccine, toxoid vaccine, attenuated vaccine, recombinant vaccine, and attenuated means live attenuated vaccines, killed for K for killed vaccine and P for polysaccharide vaccine, TARC-P, number 1. Number 2, also we studied the various examples of this one. So मोटा at least you should know कि BCG पूछते हैं, अब मैं पूरा नहीं बताऊंगा, मोटा BCG is a killed vaccine or a live vaccine? It is a live vaccine. OPV, MMR, ये एटलीस्ट इतना आपको मोटा याद होना चाहिए कि ये लाइव वैक्सीन है या फिर ये किल्ड वैक्सीन है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद क्या था? टॉक्सोइड वैक्सीन के एग्जांपल्स ऑलरेडी एम्स में आए हुए हैं, एम्स 2020 में आया था, ओके, यस।
आशुतोष मुझे पता है तुम आशुतोष ही हो, मुझे पता है, सर्जन ऑफ ईस्ट, मुझे पता है तुम आशुतोष हो, ठीक है, चंडीगढ़ से। सो टॉक्सवाइड वैक्सीन्स आर नथिंग बट टेटनस, टॉक्सवाइड वैक्सीन एंड डिप्थीरिया। टॉक्सवाइड वैक्सीन ये भी हो गया, तो हमने सारा कुछ कर ही लिया, सब कुछ ही पढ़ लिया हमने तो। Okay, there are some vaccines which can be given IM also and can be given subcutaneous also, है ना? Yes. So we have this pneumococcal polysaccharide vaccine and even IPV also. So pneumococcal polysaccharide vaccine, some normally तो ये मैं तो अपने patients को IM लगाता हूँ, but you can give subcutaneous also. Some books, कुछ books में लिखा है ऐसा, and IPV also, inactivated polio vaccine. In general, you should know this. Okay, yeah, this is a good question. Which route we don't use? So we have already done this question. In the vaccine, intravenous route use नहीं किया जाता, intravenous route नहीं use किया जाता vaccines का। What are the light sensitive vaccine? हाँ, ये बहुत अच्छा question है। Anyone, what are the light sensitive vaccine? Dear Ashutosh, could you please tell me what are the light sensitive vaccine? So we have Dr. Zabab says Happy New Year 2022, Dr. Zadab from Bangladesh. Sir, Happy New Year, sir. Happy New Year. Lot of best wishes. Hanji, yes, right. BCG is the right answer. Hey, Prabhakar, what's up? The light sensitive, see, so yes, these are the pictures. These are the pictures of the light sensitive vaccine. Again, photographic memory. Photographic memory. क्या क्या दिख रहा है? नंबर 1 BCG वैक्सीन नजर आ रहा है मेरे को। नंबर 2 DPT नजर आ रहा है रफली। नंबर 3 ह्यूमन पेपिलोमा वैक्सीन नजर आ रहा है और MMR नजर आ रहा है। एटलीस्ट दीज 4 वैक्सीन वी नीड टू रिमेंबर। ये फोटो याद रखना, प्लीज रिमेंबर दिस पिक्चर, ठीक है? क्या क्या देखा मैंने, अभी देख लिया, आंखें बंद करो, बताओ क्या क्या देखा। BCG देखा, डीपीटी देखा, एचपीवी देखा, एमएमआर देखा, मुझे भी याद हो गया। सो ये हमने देखे। इवन रोटा वायरस ऑल्सो, सम बुक सेज रोटा वायरस ऑल्सो एक लाइट सेंसिटिव वैक्सीन है। इट इज अ लाइट सेंसिटिव वैक्सीन। अच्छा, और आप देख पा रहे हो कितने अच्छे से इन्होंने बीसीजी दिया। कैन यू सी दिस बीसीजी? दिस इज अ वेरी परफेक्ट वे ही हैज गिवन द बीसीजी। कैन वी सी दिस इंट्राडर्मल? इंट्राडर्मल है ये। कैन वी सी दिस 15 डिग्री का एंगल? कैन यू सी हिज इंजेक्शन? हिज इंजेक्शन इज सो मच अबव, कितना ऊपर। इट्स नॉट like a 90 degree or a 45 degree, it's just above the skin, like through the skin. So that is, that is 15 degree. That's a very nice way of giving BCG vaccine. बिल्कुल ऐसे एकदम ऊपर से देते हैं, और लिटिल यहाँ पे छोटा सा ब्लेब बनना चाहिए, छोटा सा एक स्वेलिंग बननी चाहिए। देयर शुड बी लिटिल स्वेलिंग वंस आई पुश माय BCG वैक्सीन। सो ये बहुत अच्छा इन्होंने दिया हुआ है आशुतोष, ठीक है? डन, खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, या दिस इज अ गुड क्वेश्चन विच यू शुड नो, वेयर आई शुड स्टोर माई वैक्सीन्स इफ आई एम गिवन अ व्हाट यू कॉल्ड, या बताता हूँ डियर, बताता हूँ। ओपीवी बता, ओपीवी का इतना नहीं है ब्रो, ये वाला ज़्यादा है। लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से ये हमारे लाइट सेंसिटिव वैक्सीन्स हैं। ओके, एंड या वन मोर थिंग, if I keep the vaccines in a fridge, now where all I should keep what? We have a freezing compartment and a main compartment. The main compartment is divided into top, middle, and lower compartment. Okay, the freezing compartments, the only vaccine, the only Ishita Srivastav. Please, can everyone welcome Dr. Ishita Srivastav? She is the girl who comes late and answers the maximum. Dr. Ishita Srivastav, hello, very good, nice of you. Hanji. So, Hanji, remember about the domestic, what you called, yeah, this is a refrigerator. We have the freezing compartment and we have the main compartment. In the freezing compartment, we always keep one of the vaccine which should always be frozen. One of the vaccine which should always be frozen is nothing but our OPV. OPV should always be frozen, like should kept in minus 20 degrees Celsius. All the vaccines are kept under 2 to 8 degrees Celsius except the OPV. All the vaccines are kept under 2 to 8 degrees Celsius except the OPV, and OPV is kept under minus 20 degrees Celsius. ठीक है, that you should know. Okay, next coming to the main compartment. In the main compartment we have the top shelf, the middle shelf, and the lower shelf. You only keep the diluents. Like we'll learn about diluents also, like as a normal saline is diluent of which vaccine, like that. So you only keep like the what you called diluents in a case of in the lower compartment. In the top compartment you will gonna keep BCG and measles in the top compartments, and all the T's in the middle compartment. Hepatitis A, hepatitis B, TT, DPT, typhoid, varicella, everything. Okay, Ashutosh says, Ishita, we were waiting for you. Ishita, from today morning, this is my 4th class. 9:30 I had a class, 12:30 I had a class, 3 o'clock I had a class, and now 5 o'clock I am having a class.
अब तुम अब आ रही हो, अब नाउ यू आर कमिंग नाउ, व्हाई सो लेट, व्हाई सो लेट? Ishita, I think you're doing a lot of party. You should study, Ishita. You're not studying, bro. Okay, Vanilla, hello sir, hello ma'am, hello ma'am. ठीक है, समझ में आ गया? Please put a like button if you're able to understand. Please everyone put a like button if you're able to understand. In this slide, what did we read? Sir, number one, आपने ये बताया कि all the vaccines are stored under 2 to 8 degrees Celsius except the oral polio vaccine which is stored in the minus 20 degrees Celsius. सर ऑल्सो यू टोल्ड दैट जो वैक्सीन हैं उसमें यू हैव दिस फ्रीजिंग कंपार्टमेंट, उसमें सिर्फ हम ओपीवी रखते हैं. देन वी हैव द मेन कंपार्टमेंट, वी हैव द टॉप मिडिल एंड लोअर कंपार्टमेंट ऑफ द मेन कंपार्टमेंट. इन द टॉप कंपार्टमेंट सर बीसीजी एंड मीजल्स, इन द मिडिल कंपार्टमेंट ऑल द टीज, एंड इन द लोअर कंपार्टमेंट लोअर आई विल पुट द diluents normal like NS, distilled water, diluents like that. And on the side way, on the side shelf of the fridge, nothing you keep, no vaccine. ठीक है? Yes, very good. Okay, वेरी गुड. इशिता वो प्यार से बोल रहा है बेचारा कि वी आर वेटिंग फॉर यू, बट प्यार से तो पूछ रहा है, यूर लाइक क्यों वेट क्यों कर रहे हैं, व्हाई यू वेटिंग फॉर मी? Okay, next question. Which is the vaccine, and like these are the vaccine, what are the substrates? What are the substrates do we use in vaccine, or I would say preservative or substrate? Coming to measles and BCG, can anyone tell me what are the substrate, or what is the substrate used in the BCG, or what is the, kind of a, yes, what is the substrate or preservative do you use in measles or BCG? So the answer is no preservative. Measles and BCG, there is no preservative used in measles and BCG. That is the first point. There is no preservative used in measles and BCG. Point number 2, जो exam question आता है, yes, the preservative used for DPT, DPT is diphtheria, pertussis, tetanus. If you're a newcomer, I'll write it, diphtheria, pertussis and tetanus, right? And you know that we have something known as DTAP and DTWP. Diphtheria, pertussis, diphtheria, tetanus, acellular pertussis. See, AP is the acellular pertussis and WP is the whole cellular pertussis. In the difference I'll tell you in the next class. At least this much you should know, DTAP and DTWP. Okay, very good. So yes, the thiomersal, dear, yes, Ishita is so right. Thiomersal is the preservative used for DPT. For the DPT, that the preservative uses thiomersal, and adjuvant is aluminium hydroxide. Adjuvant is aluminium hydroxide. For measles and BCG, there is no preservative. And for OPV, for the OPV, we have a thermostabilizer, that is magnesium chloride. So in this slide, what did we learn for exam purpose? Number 1 MCQ was measles and BCG, what is the name of preservative? The answer is there is no preservative for measles and BCG. Question number 2 was for what is the preservative used for DPT? The answer is thiomersal. That is the exam question. Preservative used for the DPT vaccine. क्या समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो आप दिल दे सकते हैं. कौन सा दिल? Could be a blue heart, could be a black heart, could be a red heart, could be a whole, could be anything. Okay, that you should know. Okay, very good. So these are the important points of vaccine. 5 more minutes, then we'll end the class. It was a very short and sweet, this one. Acha, okay. As I wrote for measles, I thought, okay, dear, no problem, no problem. So Jogesh Saini, very good. Vanilla, very nice. Black heart, Kala Dil, very good. So heat and freeze sensitive vaccine. हाँ, ये एक लाइन का आंसर है. Which is the heat sensitive vaccine, which is the freeze sensitive vaccine. ये दो MCQs आते हैं. Means in this slide we are learning 2 MCQs. Which is the freeze sensitive vaccine? The most freeze sensitive vaccine, which should always be frozen. The answer is OPV. OPV, I told you, should be frozen in minus 20 degrees Celsius. OPV, I told you, should be in a dabba, it should be in a box, and OPV should be kind of it is a most freeze sensitive. Okay, you have to freeze the OPV. ठीक है? सायनी सेज मेरा दिल साफ है. नहीं, मेरा काला है. मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब क्या है तुम्हारा? मेरा दिल भी साफ है, तुम्हारा दिल भी साफ है. दिल के रंग होते हैं अलग अलग, बस लाल होता है तो कोई पीला तो कोई नीला. सो क्या कहते हैं हम, जो बहुत ही फ्रीज सेंसिटिव है, प्लीज रिमेंबर डियर, जो बहुत ही फ्रीज सेंसिटिव है, जिसको फ्रीज करना ही करना है, वो है ओपीवी. एंड विच इज द हीट सेंसिटिव, हाँ, वेरी गुड.
Exactly. So yeah, you know that. So we have the heat. Okay, I think yeah. Remember the heat sensitive. The most heat sensitive will be our, of course, the OPV, the heat sensitive, and the freeze sensitive will be our hepatitis B. Okay, hepatitis B. I'll repeat again. Hepatitis B will be the freeze sensitive vaccine, and most heat sensitive vaccine will be our OPV. Okay, या हाँ एग्जैक्टली मतलब फ्री सेंसिटिव का मतलब ये यूँ समझो कि ओपीवी समझ ले। सावन सावन अब लेट आया है। सावन सिंह प्लीज अंडरस्टैंड, ओपीवी जो है हमारा वो हीट सेंसिटिव हो गया। मतलब उसको ओपीवी यू हैव टू कीप इन फ्रोजन, यू हैव टू कीप इट वेरी वेरी फ्रीज इन -20 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज वो एक हीट सेंसिटिव वैक्सीन है। और जो हमारा हेपेटाइटिस बी है वो फ्री सेंसिटिव है, ऐसे याद रखना। हेपेटाइटिस बी फ्री सेंसिटिव एंड ओपीवी इज heat sensitive. Okay, that's it. And next important question, yeah, all teas try not to freeze. ये बहुत important एक point आता है, all teas try not to freeze. You don't freeze, you don't freeze. See, what are the vaccine which are susceptible to damage by freezing? What are the vaccines which are susceptible to damage by freezing? सारे के सारे teas, diphtheria, tetanus A, cellular pertussis, diphtheria, tetanus, whole cellular pertussis, hepatitis A, TT, diphtheria, tetanus alone. This small t is T is tetanus and D is small d जहाँ बोलते हैं उसका मतलब होता है reduced dose of diphtheria, reduced dose of diphtheria and TT. All T's try not to freeze. All T's try not to freeze. Remember that. Okay, Savan says late नहीं हूँ sir. I was driving and listening to your class instead of radio. Very good. तुम्हारा तो होके रहेगा सिलेक्शन, तुम इधर ही आ जाओ, तुम मेरे घर के 2 गली छोड़ के रहते हो वैसे, तो अच्छी बात है, ठीक है। ऑल टीज ट्राई नॉट टू फ्रीज, रिमेंबर इसको प्लीज याद रखना, ऑल टीज ट्राई नॉट टू फ्रीज, ये सारे टीज को फ्रीज हम नहीं करते। अच्छा, एंड व्हाट आर द वैक्सीन दैट कैन बी फ्रोजन? ऑफ कोर्स ओपीवी तो बड़ा बड़ा अपने माथे पे लिख लो, ओपीवी कैन बी फ्रोजन और शुड बी फ्रोजन इन -20 डिग्री सेल्सियस। वैक्सीन्स दैट कैन बी फ्रोजन आर ऑफ कोर्स आवर ओपीवी। देन नीचे लिस्ट ऐसे आ जाती है, मीजल्स, एमएमआर एंड बीसीजी, बट ओपीवी हमको, ओपीवी इज इंपॉर्टेंट, ओपीवी शुड बी देयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, I am allergic to egg. So Savan, I am allergic to egg. So which vaccine I should be avoiding myself? Anyone? I am allergic to egg. Okay, yes. I'm allergic to egg. Which what do you call vaccine I should be aware of? So Ishita says, what do you called? Savan, in your pic you seem very thin, but sir says you are very fat. Because this is that pig, it is 5 years old pig, that is why he looks very thin. He comes to my night duties. In my night duties he comes to help me in the deliveries, so he's very fat. ये बहुत पुरानी पिक्चर है, वो पागल बना रहा है, कुछ नहीं कर रहा है वो। सो एलर्जिक टू एग, आई एम एलर्जिक टू एग। सो येलो फीवर वैक्सीन एंड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, येलो fever vaccine and influenza vaccine should be avoided if I am allergic to egg. इफ़ आई एम एलर्जिक टू एग, तुम मुझे मत लगाना येलो फीवर वैक्सीन एंड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, क्योंकि उसमें कुछ एग के सबस्ट्रेट्स होते हैं, इस करके नहीं लगाना। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। Next question. Last year I had a history of intersusception. Last year I had a history of intersusception. Then which vaccine is contraindicated if I'm having a history of intersusception? Anyone? Anji, Savan Singh. Anji. So intersusception. Anyone? So the answer is rotavirus. Rotavirus. Rotavirus vaccine should be avoided if you have a history of intersusception. नेटवर्क इशू मेरा नहीं है इशिता, तुम्हारा होगा, मेरा तो 4G चल रहा है, मेरा नेटवर्क इशू नहीं चल रहा, ठीक है। सो हाँ जी, वेरी गुड। सो रोटा वायरस शुड बी अवॉइडेड इफ आई हैव अ हिस्ट्री ऑफ इंटरसेप्शन। वेरी गुड, परफेक्ट, yes, this is a very beautiful question. कौन बताएगा? So this anyone can tell, even my doggy also can tell. His name is Oscar. I have a dog named Oscar. And okay, what all dogs like? Which dogs do you like? Like I had a Labrador, and I'm having a Beagle, and my sister has a Golden Retriever. So what's your favorite breed? Anyone? What is your favorite breed of dog? आप लोगों को डॉगी पसंद है? Do you guys like doggy? Which breed of dog do you like? Anyone who has kind of this one? Yeah. Okay. So which breed? Do you like Labrador? Do you like Beagle? Do you like Golden Retriever? Even Pomerian. Pomerian is also good, I guess. Pomerian भी बहुत बहुत sweet होते हैं. Anyone? ओके, अमेरिकन बुली। लो आशुतोष देखो कहाँ अलग लेवल का ही बंदा है ये। अमेरिकन बुली, ठीक है। अमेरिकन बुली कौन से वाला? पिटबुल वाला कह रहा है? पिटबुल वाला बोल रहे हो डियर?
कौन से वाला कह रहे हो? पिटबुल तो मेरे फ्रेंड के पास है पिटबुल। देखने में दे आर वेरी फिरोशियस, बट दे आर वेरी स्वीट। माई फ्रेंड हैज़ अ प्योर वेजिटेरियन पिटबुल एंड ही लुक्स सो लाइक अ टाइगर, खूंखार ही लुक्स। शिट्जू, ये शिट्जू इज ऑल्सो नाइस। हमारी गली में घूमता है शिट्जू। शिट्जू हमारी गली में घूमता है। उसका नाम है हैप्पी, उसका हैप्पी नाम है उसका। लाइक मेरे इन माई एरिया नो, लाइक वी ऑल हैव अ मीटिंग विद ऑल द डॉग्स, दे मीट टुगेदर एट 10 o'clock in the night. The Shih Tzu, Golden Retriever, my Beagle, everyone comes and they all have like great fun and they play and all that. अच्छा, लेब्रा, लेब्रा इज़ वेरी गुड। अच्छा, यहाँ मेरे पास बहुत सारे लेब्रा रह चुके हैं। माई फैमिली वी ऑल लव डॉग्स। आई हैड अ लेब्राडोर एंड नाउ आई एम हैविंग अ बीगल। माई सिस्टर हैज़ अ गोल्डन रिट्रीवर एंड बस छोटा सा ही घर है, इतने कुत्ते बहुत हैं वरना परेशानी हो जाएगी। सो दिस वन, येस डियर, यू ऑल आर वेरी राइट एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट यू कॉल्ड, क्या कहते हैं, वैक्सीन वायल मॉनिटर। दिस इज नथिंग बट VVM। व्हाट इज VVM? वैक्सीन वायल मॉनिटर। वो क्या होता है सर? मैंने तो नाम पहली बार सुना है। कोई बात नहीं यार, मैंने भी पहली बार सुना है। नथिंग, वैक्सीन वायल मॉनिटर। वी कैन सी दिस वन, सी दिस इज द इनर स्क्वेयर विच इज वाइट इन color and we have the outer circle which is blue in color. This is blue in color and this one is white in color. Normally this, that is how a fresh vaccine should look like. Normally a fresh vaccine should look like this, where the inner square is the white and the outer circle is blue. Okay, this is the normal thing. If the inner square matches the outer circle, मतलब पूरा अगर blue हो जाए, that means the vaccine should be discarded. Okay, I'll repeat again. Normally it looks like this, where the inner thing is white and outer thing is blue. But if the inner and outer matches together, means the vaccine should be discarded. The vaccine should be discarded. And if the inner square is more darker than the outer circle, means then the vaccine is beyond the discard point. Beyond the discard point. समझ में आया नहीं आया? Yes or no? समझ में आया सबको या बातें ही कर रहे हैं सब? हाँ जी, वेरी गुड, यस यस। सो ये वाला, हाँ, वेरी गुड, परफेक्ट। यस, सायनी सेज आई लव डॉग्स नो मैटर विच ब्रीड। या दैट इज ऑल्सो नाइस, दैट्स ट्रू डियर। ओके, ईशा सेज सर बिचॉन फ्राइज। ईशा सर, ये नाम भी इतने हाई फाई तुम बोलती हो ना, मेरे को तो प्रोनाउंस भी करना नहीं आता। मुझे गूगल करना पड़ेगा ये वाला नाम तो यार। बिचॉन फ्राइज, ये क्या होता है? ये क्या है? ये खाने की चीज़ है कि ये कुत्ते का नाम है? क्या है ये एग्जैक्ट? पहले तो ये बताओ मेरे को। Very good. So can we see that number one, that this vaccine is good to use? This is also okay to use. This one is discard point and this one is beyond discard point. Beyond discard point. समझ में आ रहा है या नहीं? आप समझ पा रहा है everyone? Please put a like button if you are able to understand. 40 minutes over, then we are ending the class now. छुट्टी करते हैं क्लास की बस। हाँ जी, ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ गया? वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलो अच्छी बात है। हाँ, ये हो चुका है। आई एम एलर्जिक टू एग, आई शुड बी केयरफुल ऑफ इन्फ्लुएंजा वैक्सीन एंड येलो फीवर वैक्सीन, दैट पार्ट इज ओवर। ओके, सो 40 मिनट्स ओवर, 40 मिनट्स। BCG, मेरा मन है कि हम अगली क्लास में पढ़ते हैं फिर, या तो BCG अभी पढ़ें कि अगली क्लास में पढ़ें? टाइम कितना हुआ अभी? 6:13 हुआ है, 6:13, सो इट्स अराउंड 45 मिनट्स। अगली क्लास में ही पढ़ते हैं, ठीक है? सो लेट्स दैट्स वी हैव फिनिश्ड दिस फर्स्ट हाफ ऑफ द सेगमेंट। आई विल रिपीट अगेन, वी व्हाट ऑल वी डिड वी लर्न, कैन वी रिवाइज? First, we learned something about the vaccine vial monitor, which is a very important community medicine question and a pediatrics question. Then also we studied के vaccine that can be frozen or the should be frozen is our OPV. OPV का नाम तो पक्का याद रखना है। और the vaccine which should not be frozen, the answer is all T's. Hepatitis A, hepatitis B, everything is nothing but they should not be frozen. Only OPV should be frozen. एक बस बात का याद रखना, ये वाला पॉइंट ना आई वुड लाइक टू टेल अगेन। मतलब फर्स्ट टाइम मैंने उल्टा बोल दिया था। प्लीज रिमेंबर आई जस्ट कट दिस पार्ट। प्लीज रिमेंबर द मोस्ट सेंसिटिव, द मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन विल बी OPV, क्योंकि OPV को we cover it in a -20°C and it's very, it's, or you keep it in a deep freeze kind of a thing. It's very heat sensitive. So OPV is very heat sensitive and hepatitis B is freeze sensitive. Hepatitis B is freeze sensitive. Hepatitis B को freeze करोगे तो खराब हो जाएगा
ओपीवी को हीट करोगे तो वो खराब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस। सो आशुतोष से सर योर टीचिंग इज सो मैजिकल, सर योर वर्ड्स आर मोर मैजिकल। आप मेरे से ज़्यादा आपके शब्द हैं जो बहुत ही प्यारे हैं। एंड रिमेंबर आई एम नथिंग विदाउट योर सपोर्ट। ओके, सो ओपीवी इज हीट सेंसिटिव एंड अपना हेपेटाइटिस बी इज व्हाट यू कॉल्ड फ्रीज सेंसिटिव। और रिमेंबर डियर, लेटेस्ट गाइडलाइन क्या कहती है? देखो, फ्रीज सेंसिटिव तो बता दिया मैंने कि हेपेटाइटिस बी को फ्रीज करोगे तो खराब हो जाएगा, और ओपीवी को हीट करोगे तो खराब हो जाएगा, राइट? एंड लेटेस्ट गाइडलाइन सेज कि मोस्ट हीट सेंसिटिव हैज बिकम आरबीसीजी, रिकंस्टिट्यूटेड बीसीजी जो होता है दैट हैज बिकम द फर्स्ट मोस्ट हीट सेंसिटिव। मतलब ओपीवी को हीट किया तो खराब तो होएगा ही होएगा, आरबीसीजी रिकंस्टिट्यूटेड बीसीजी जो है दैट इज द मोस्ट हीट सेंसिटिव। ठीक है, याद रखना। देन ऑल्सो वी कवर्ड इन दिस क्लास के मीजल्स और बीसीजी का कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता, एंड थायोमर्सोल इंपॉर्टेंट है। थायोमर्सोल जो है वो डीपीटी का प्रिजर्वेटिव है, मीजल्स और बीसीजी का कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता। ठीक है, हमने और क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं। सबसे ऊपर तो हमको फ्रीज वाले में ओपीवी को रखना चाहिए। फ्रिज का जो नीचे वाला कंपार्टमेंट होता है उसमें होता है टॉप, मिडिल एंड लोअर कंपार्टमेंट। टॉप कंपार्टमेंट बीसीजी एंड मीजल्स, मिडिल कंपार्टमेंट ऑल द टीज, एंड सबसे नीचे वाला कंपार्टमेंट is nothing but diluent, and the light sensitive vaccines are BCG, DPT, HPV, MMR and rotavirus। ये पता होना चाहिए। ठीक है, बस होगी पूरी कहानी, पूरी किताब खत्म हो चुकी है। That finishes today's session. Thank you so much for the wonderful participation. A very, very, very happy new year to all of you. Ishita, Sayani, Ashutosh, Vanilla, Savan and और हजार लोग जो बैठे हैं, I wish you a very happy new year. May God give you everything in life. Be positive, stay healthy, stay peaceful, stay calm. और हम तो कल मिल ही रहे हैं फिर दोबारा। कल मेरी नाइट ड्यूटी है और कल सुबह 9:30 वी हैव अ क्लास ऑन वैक्सीन्स पार्ट 2। So the newcomers, we have a class on vaccine part 2 where I'll be talking about BC। मैं एक एक करके सारे वैक्सीन को पकड़ूंगा, BCG, देन रेबीज, ऐसे कर करके बहुत बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से वी विल स्टडी। एंड तो कल सुबह 9:30 स्पेशल क्लास। इफ़ यूर अ न्यू कमर प्लीज़ डाउनलोड अन अकेडमी ऐप एंड वेयर वी हैव दिस फ्री स्पेशल क्लासेस फॉर एवरीवन एंड दैट्स इट। ठीक है, चलो बाय। सावन आज ही हो, कल ड्यूटी है मेरी, कल नाइट ड्यूटी है, कल तू आ जाना कार पे। ठीक है, निशी बाय, सर्जन ऑफिस आशुतोष, जोगेश, बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। ठीक है, हम मिलते हैं कल सुबह। अब मैं मिलूंगा तुमको अगले साल, कहते हैं अगले साल मिलेंगे, कल ही है अगले साल तो। ठीक है, रिमेंबर दैट। एंड ऑल्सो दैट्स व्हाट या बीसीजी हम अगली क्लास में ही करेंगे। बीसीजी एटलीस्ट इट विल टेक अराउंड 40 to 50 minutes, दैट्स वाई। चलो, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, सी यू अराउंड, बाय बाय।